So let's start about today class. In this class, we will the design a PV storage system in Homer Pro. ये हमारी लैब का टाइटल है। आज के लैब का टाइटल डिजाइन अ पीवी स्टोरेज सिस्टम इन होमर प्रो। ये लैब नंबर 1 इसने लिखा, लेकिन ये हमें अभी लैब नंबर 2 चल रहा है क्योंकि हमने पहले एक किए। इस लैब में हम क्या करेंगे? इस लैब में सबसे पहले आप होमर प्रो ओपन करेंगे और होमर प्रो में आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे? यू विल यूज़ द पीवी सिस्टम, द स्टोरेज बैटरी। As when we use the PV system, it will be sufficient for our load, but there will be extra power, so we will store this in the batteries. और ये जो बैटरीज होंगी ये फिर हम कब यूज़ करेंगे? when there is no availability of the sun, for example in night time. So in night time we will use the storage batteries. So for storage battery, as our load our maximum load is AC, so we will use the converter. This converter will do two things, from DC to AC and AC to DC. And there will be electrical load, and we will use a small generator, as the batteries will not enough to require our requirement. So in the case there is no charge in the batteries, in this case we will use our generator. So our whole system will contain two components. One is PV system, photovoltaic cells, and the second is generator. So from PV system we will in PV system our day load will be operated, and some of the energy will be stored in the batteries, but in night time these batteries will be not enough for our load, so we will use generator. Or in the days at which there is a cloudy days, and cloudy days we also can't use the PV cell efficiently, so in these days we will use generator. So therefore in this system we want to insert two powers, two energy power system. One is PV system and other is generator. So this is the required component in Homer Pro. In Homer Pro we will take the load, we will take the PV system, and then we will connect the storage batteries and the converter, and then converter will convert AC into DC and so on. So when we design our system in Homer Pro, its schematic diagram will be such like this. In previous class, we have discussed that in other software, we will design the schematic system. But in this software, there is no need of designing schematic diagram, as it will generate the schematic diagram for us. So we will just take the load, and we will take the PV system, we will take the batteries, and it will connect this in schematic diagram by default. So for how we will do this? So in previous class you have studied that when you open the software, so this will be your first interface. In first interface you will first of all you will search the area for which you want to design the PV system or other systems. So now we design PV system, so we will search the area for which we will design PV system. First go to Homer tab and search the location such that Navshehra in location tab. For example, you want to design PV system for Dirlower Temargara, so you will search it. You can search Mardan, Peshawar, जो भी आप search करें, it will be here for you.
When you search the location, then there will be this button. This is called resources, and you will download the resources from here, that what type of resources are there available. So NASA is a online database, and he have different and he has taken the resources for different locations, and you can also import. By import, we mean that you can insert the data from your laptop, and this data will be your own data, and you have been taken through experimentally. फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह किया कि नौशेरा के लिए आपने बना रहे हैं, तो नौशेरा के लिए आपने इस तरह किया कि कोई बंदे ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए कि इस टाइम सूरज की रेडिएशन इतने होते, सो उसके साथ डेट आए, तो वही फाइल आप इंसर्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सर्च द लोकेशन where you want to where you want to design a system, where you want to implement your system, and then you will download the resources. First step is searching of the location. The second step is applying the resources. The next step is that you will insert your name, PV storage system. Either you can type this lab number 2, and there will be, you will insert your own name. Okay? When you insert your own name, you can generate the report on your name. So it is very important that you will insert your own name here. And description, you can write that what type of system is this, that in this lab we will just write the title of the system, that designing a simple PV storage system. But you can write here the detail of your project. ठीक है, किसी को तो पता नहीं लगता कि आपने क्या चीज़ डिज़ाइन किया, तो आप इधर डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस सिस्टम, एंड फॉर व्हाट पर्पस दिस सिस्टम इज़ यूज, एंड व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, व्हाट टाइप ऑफ पावर सिस्टम यू हैव inserted in here. Then you will after taking the title, you will select your peak month. So in Pakistan, the peak month is July. Is in July we want to uh, run our ACs, our fans, and heavy machinery like this. But in there is no cold here, that we use the heat power plant. So in Pakistan, the peak month is July. In July, the load is maximum. But in other country, for example China, so in China there are some area where it's very colder, then in which the temperature goes up to minus 40 degree. So in this area they use heavy plants for heating. So in that area they will use the peak month is January. So but in Pakistan point of view, we will use the July. We will select the load, that we will click on the load that we will connect as July. So there will be option community. By community we mean that for universities, for hospital, or other public places. You can design for industry, for your home, for city. So then we will add the PV system from the component tab. We will open the component tab, and from component tab we will insert the PV system and edit the properties as shown. We will edit the properties as we will insert the PV system as per our requirement. So the requirement is that how kilowatt is our load.
لکه په اگزامپل تاسو 23 کیلو واټ دی نو بیا به د هغه مطابق ته اخلي صحیح ده. Then we will add the battery and battery is used for storage of the power system. ये हम करेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये उधर अभी आएंगे. So we will insert different quantities, how many quantities of the battery, what is its capital cost, what is its initial cost, and so on. Add a generator for backup. We will insert generator for backup. In those days, in cloudy days, we will unable to run our load from the PV system. So in this case, we will use our generator. So we will insert diesel generator. After insert this, we will add AC to DC converter, and then at the last we will do the calculation that how we will calculate our results. After calculation, different result will be appear, and we will discuss these results. In the last, you will do this lab task that practice the lab with using different PV panel and battery storage and generators, and generate the report with your name. You will generate the report on your name. So for this, we will use in other our own name in the case of other. Okay. So let's start. समझ आ गया कि हमने अभी क्या कहा. دا ما څه پکې نه لګا دا مسله کې دا دغه نه دي دا پکې صحیح نه دي دا لوډونه دا پکې ویزیبل نه دي نه کلک کېږي پې. So सबसे पहले आपने क्या करना है, we will search the location. For example, now we want to design a system for UT Nowshera. So we will search Nowshera, and Nowshera is city. ठीक है, ये जो आपके साथ लोकेशन आ रही है इसको इसका नाम है रेड ब्रिज नौशेहरा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान. इसका ये लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड ये. तो ये जो अमानगढ़ का सबसे बड़ा ब्रिज है इसका नाम है रेड ब्रिज. दाम याद के सोख ने तो पूछ की सरजी دا پور پول له دا دان کلی کې دی خو دا کم یو دی دا غټ یو پل نه یادای. نو سر دا خو مانګړ پول له سر دی خو ریډ پول سور پول دلته پیادي سر دی خو دا قدیمی پول له کسر دی راکېچ کړه. خو بس ټیک ته دا دغه ایریا اوس راواغېستله دا مونږ اوس لوکیشن دلته جوړو. نو نیم به تاسو څه ورکوئ لیب نمبر 2. اتر نیم به څه ورکوئ خپل نیم به ورکوئ. ټیک شو. خپل نیم به ولې ورکوئ ځکه چې تاسو په دې کې اټومیټیکلی دا تاله ریپورټ هم جوړئ. نو چې هغه ریپورټ جوړوئ نو هغه به ستاسو په نوم باندې راشي. ډیزاینینګ آف PV storage system in Omar Pro. ये आप करना है. ये आप ना छेड़े क्योंकि ये तो हम ऑनलाइन करते हैं. ठीक है, ऑनलाइन डेटा यूज करते हैं.
तो इसलिए इसका आप इफिशिएंसी इन्फ्लेशन रेट इसको ना चढ़े। लेकिन आपने रिसोर्सेज भी ऐड करने, ठीक है। तो रिसोर्सेज आप ऐड करिए यहाँ से, इस पर क्लिक करिए। रिसोर्सेज आपके साथ नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैब, इन्होंने एक डेटाबेस दिए, नासा वालों ने डेटाबेस दिए। तो आपको जो भी पसंद है आप इस पर क्लिक करिए। नासा के टेम्परेचर भी और इसको आप जित सारे डाउनलोड करें, ठीक है। सामने क्या क्या किया गया, रिसोर्सेज वर डाउनलोड सक्सेसफुली, इस बार इसको आप ओके कर दिए। इसके बाद आपने ये नाम वगैरह भी दिए, ठीक है। इधर देखिए आपके साथ स्कीमेटिक में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने इधर कुछ इंसर्ट नहीं किए। ये भी आएगा ऐड द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो ग्रीन हो जाए इसका मतलब है ये काम हो गया। तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इधर ऐड किया, तो इधर आ गया ऐड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तब पे क्या ऐड द लोड, सबसे पहले आपने लोड डिफाइन करना। तो लोड पे क्लिक करें, इसमें आप क्या करें, जुलाई ले लें, पीक मंथ। ये रेजिडेंशियल atau mana residential saya tahu. Tahu Rahman, nesta tahu Rahman bagi. Mazhara, hello Mazharo. Daniela, आवाज तराजी जी सर। रेजिडेंशियल से tahu. सर रिहायशी। ठीक شو کمرشل چې دا د پلازو ملازو ته وي، خپل دوکانونه لو کې انډستری لپاره کمیونټي چې دا زموږ څخه کې د پبلک پلیسز راځي. دا موږ څه کو اوکې کو سپوز کمیونټي دا تاسو باندې ډیپند کوي چې سره لپاره کې جوړې سي دا موږ صرف پروسس یاده. مثلا کې تاسو به کې تیر ځل ما ریزیډنشل لکه دا ځل مې کمیونټي لو. ٹھیک شو اوکې کا دا اصل کې د نت څخه آنلاین دی کنه ټوټل چیز نو دی وجه نه دا لګه او زما سره جوړ نت لګ سلو دی، دی وجه نه دا سلو. शाबाश. अब प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि व्हाट डज दिस शो। इट शो द डेली प्रोफाइल, कि डेली प्रोफाइल में आपके साथ ये रेडिएशन कितनी आ रही है। तो देखिए 12 बजे इस तरह कुछ अच्छी सी नहीं सर, ये क्या है, किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर के हमने लोड कितना है, तो हम आपको मालूम है कि 6 बजे से ये जो टाइम होता है इसमें लोड ज़्यादा होती है। शाम को हर एक आते हैं और अपनी अपनी फ्लैंजेस को ऊपर करते हैं, तो इसकी वजह से लोड क्या करते हैं, बढ़ने लगती है। सो ये आपके साथ डेली प्रोफाइल है, ये मंथली प्रोफाइल है। आप एक पे क्लिक करिए, ये देखिए जुलाई सबसे ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में जुलाई मैक्सिमम होती है। इधर आपसे तकरीबन 23.31 किलो वाट, एवरेज इसका 17 है। ये तकरीबन इस पर क्या करते हैं, इतना आ रही है। इधर भी अगर आप देखें तो ये जो रेड आ रहा है ये सबसे मैक्सिमम में, ये अगर आप देख ले रेड इधर है, तो ये तकरीबन आपके साथ जून जुलाई हो। आपको मैंने ये भी कहा था कि आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इधर आपके साथ इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा था जो पहले हम इंसर्ट करते थे। इधर आप रिमूव करें तो आपके साथ ये रिमूव हो जाएगा दोबारा। नोट पे क्लिक करें, ये देखिए इंपोर्ट एंड एडिट इंपोर्ट। तो इंपोर्ट आपके साथ वही होते हैं जो आप पहले से आपके साथ अगर एक फाइल एग्जिस्ट करता है इन योर सिस्टम, so how you will insert this into Homer Pro. So in this case we will use this option, but we want to use the online data. For this we will use July and community, and we will use this OK button, so it will be take online. और इसने क्या किया, चूंकि लोड बाय डिफ़ॉल्ट एसी होते हैं तो इसने एसी के साथ इधर कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लोड टाइप डीसी के डलते ना डीसी बस बार हो सारा है जो एसी की एसी बस बारो
راشي نونغا كانسل كو چې لوډ زموږ څه شی دی اي سي دی ټیک شو دې ځکه نه تاسو لوډ چینج کیږي اي سي ډي سي ته اوړي ا دا وګوره د دې پیک ویل څه شي دا 23.31 کیلو वाट पीक ده इसके बाद आप कंपोनेंट पे जाएंगे कंपोनेंट में आप क्या लेंगे पीवी सेल तो पीवी सेल आपने लेना है तो पीवी सेल पर क्लिक करें आप यहाँ से कंप्लीट कैटलॉग पे जाए कंप्लीट कैटलॉग का मतलब है कि ये आपको जितनी भी कंपनी से जिसने पीवी सेल आपके लिए डिज़ाइन किए उस कंपनी का नाम आएंगे और इसका एफिशिएंसी कितनी है इसका कितनी पावर ये जनरेट करते तो सब कुछ आपके साथ इधर होंगे तो आप क्या करें कंप्लीट कैटलॉग पे जाए अभी ये देखिए 23.31 है ना तो आप ऐसी पीवी सेल लेके इसका तकरीबन 23.31 हो तो इधर आप क्या करें कंप्लीट कैटलॉग पे जाएं ये देखिए किलो वाट तो इधर आप 23 सर्च करें इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगा ये 24 तकरीबन इसके करीब है तो इसको अगर आप यूज़ करें और क्या करें ये देखिए अभी ये एसी के साथ सेलेक्ट किया क्योंकि बड़ी बात हमने एसी लिए तो आपके साथ पीवी सिस्टम भी एसी हो सकता है इसमें इंटरनली क्या इन्वॉल्व होती है कन्वर्टर के ऑन होते हैं लेकिन जनरली हमारे साथ जो पीवी सिस्टम होते हैं वो डीसी होते हैं तो इसलिए मैंने डीसी को सेलेक्ट कर दिया जब मैंने डीसी को सेलेक्ट कर दिया तो इसने 2 बस बार इसने जनरेट किया एक बस बार एसी के लिए लोड के लिए और एक बस बार डीसी के लिए और इधर आप क्या करें सर्च स्पेस तो इधर आप लिख सकते हैं कि सपोज 48 आवर के लिए कर दी इसके अलावा आप कोई 60 कर दे तो ये इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप ये भी होमर ऑप्टिमाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं तो होमर होमर ऑप्टिमाइज़र का क्या मतलब है कि ये जो होमर सॉफ्टवेयर है ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें देगा कि कितने कितना वोल्ट वाली पीवी सेल आपको दरकार है और ये खुद भी आपके लिए क्या करे ऑप्टिमाइजेशन करेगा जो ऑप्टिमम रिजल्ट आपकी कौन सी है इसका कैपेसिटी कितना था 24 तो चलो 23 आप लिख लें और इसका कैपिटल कास्ट $3000 है तो इसको आप कम भी कर सकते हैं कि चलो $300 आइए देखो डॉलर रानी $3000 मन पड़ी पी सिलवा उसमें कड़े भाई और ओ एंड एम का मतलब है ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट कास्ट अगर आप पीवी सेल को यूज़ करी तो इसका कैपिटल कास्ट क्या होगा कैपिटल कास्ट का मतलब है जो आप अभी लेते हैं ना तो इस वक्त जिसका कास्ट इसको इनिशियल कास्ट और कैपिटल कास्ट जब आप इसको रिप्लेस करते हैं तो फिर इसका इसका नाम होता है रिप्लेसमेंट कास्ट और अब ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस इसको $10 हमने लिखा कि ऑपरेशनल मेंटेनेंस पे तकरीबन $10 पर ईयर खर्च है क्योंकि पीवीसी में इतना खर्चा नहीं होता ना ये ज़रा शमसी वाले बोलन पाके हनो खराबी ना राजी का न दा बराशी ठीक शो इसके बाद आपने क्या लेना है इन दोनों के दरमियान रिलेशन कायम करना क्योंकि एक बस बार के साथ करना चाहिए दूसरी बस बार के साथ इससे या तक कोई एनर्जी तो नहीं आ सकती तब क्या करें इसके लिए एक कन्वर्टर यूज़ करें ये देखिए ये अगर कन्वर्टर आपके साथ बाई डिफ़ॉल्ट फिट नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे लाइब्रेरी पे जाएंगे और यहाँ से कन्वर्टर चेक करेंगे ठीक है और इसको इस तरह सिस्टम कन्वर्टर पे टिक करें तो फिर आपके साथ आ जाएगा ठीक है kala kala nake no ko ne ka wada sanu biya bada shi was da converter da by default ka sanu da ba mangal leri ko mun ba catalog ko complete catalog ke bade chalo ko چې تقریبا efficiency به د نه 25% سی وای نو که دا تاسو معلومه کړئ څومره به راشي کیلکولیټر باندې تاسو وکړئ 25% 0.25 multiplied by 23 نو تقریبا 5 प्लस تقریبا دغه 28 پورې چې راشي efficiency داسې یو کنسټرن چې 28 26 25 پورې مینو ټیک ده
ګورې په دې کې به چک کړي په دا چې دا اوس مونږ د ځان نه اخلو که نه نو تاسو چې کله اګزیکټ سیسټم ډیزاین کوئ نو بیا به ګورئ بیا به ډېر په سوچ باندې کوئ د هر یو ډیټا شیټ به اخلئ هغه به اخلي اوس موږ چونکې لیب پوینټ آف ویو صحیح نو مونږ پکې دومره ټینشن ځاته نه جوړوو باید داسې 25 واخیستو ټیک شو نور به ته بیا اګزیکټ کالکولیشن وکړي چې 25% د دې لوډ څومره سی جوړېږي بیا به هغه په دې لوډ پسې ایډ کړي نو دومره پرسنټ کنورټر به ته یوز کړي چې هغه دنه صحیح سی وایي this a component will be replaced دا replace کا ته وګورئ نه مخکې کنورټر اوس چې دی نو لیون 25 کنورټر اسلامي یوز کیا السلام علیکم ठीक सही है सो आपने क्या यूज करने कन्वर्टर आपने लगाने इट कन्वर्टर विल कन्वर्ट द पावर फ्रॉम डीसी टू एसी तो आपने ये कन्वर्टर लगा दिया इसके बाद आपने क्या करना है ये जो पीवी सिस्टम है ये पीवी सिस्टम क्या करेगा आपके लिए कुछ ये जो एनर्जी जनरेट करेगा इसको आपने कुछ स्टोर करना है बाबा से की बैटरी बारह वाली نو بیټري چې دا نو اوس پته وه پاکستان ته ګوري نو په پاکستان کې چې موږ کمې بیټریان یوز کوو نو هغه زموږ سره تقریبا صحیح 12 वोल्ट आपने क्या करने 12 वोल्ट तो आपने लेने हैं ठीक है इसके अलावा इधर भी बहुत से 12 वोल्ट आ जाएंगे ठीक है इसका मतलब नहीं कि ये एक है हर कंपनी का है ठीक है इधर ये भी आ गया कुछ 12 वाली ऊपर ये देखिए तो ये मुख्तलिफ कंपनी है ठीक है हर एक कंपनी ने अपने लिए कुछ बैटरीज डिज़ाइन किए तो आप वही बैटरी को क्या करें यूज़ करें सपोज हमने जस्ट ये जेनेरिक किलोवाट आवर लीड एसिड बैटरी ये हमने इसको क्या क्या यूज़ किया ओके कर दिया ठीक है ये कितनी यूज़ करते हैं तो हमने सपोज 2 कर दिया और ये अभी हमने अभी क्या कैसे पोजीशन कर दिया क्योंकि ये जो पीवी सिस्टम होता है ये पीवी सिस्टम आपको 12 वोल्ट नहीं देते ठीक है ये कभी 20 वोल्ट के होते हैं 24 के होती है ठीक है तो हमने सपोज किया कि ये 24 वोल्ट के है तो 24 वोल्ट के लिए हमने 2 बैटरीज को सीरीज में लगा दिया ताकि इसका वोल्टेज इसके बराबर हो क्योंकि ये तो बस बार को 24 वोल्ट देगा तो इधर आपके साथ ऐसी बैटरी होनी चाहिए कि इसका भी ये भी 24 का हो ठीक है अभी मुझे तो पता नहीं कि कितना है तो आप क्या करेंगे कैसे आपको पता लग जाएगा कि ये पीवी सेल कितने तो आप इस पीवी सेल पे क्लिक करें और इधर इसकी ये जो टेक्निकल डेटा फॉर सीमो 24 इस पर आप क्या करिए क्लिक करिए तो आपके साथ डेटा शीट ओपन हो जाएगा फिर इधर आप देख ले कि ये कितने वोल्ट का है ठीक है तो इसके मुताबिक आपने लगाने लेकिन चलो हमने इधर होमर प्रो लगा दिया होमर प्रो ऑप्टिमाइज़र तो ये होमर प्रो हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके साथ इस तरह बैटरी लगा देंगे कि ये इसके साथ कंपेटेबल होगा पर अगर ये 24 वोल्ट का है तो ये भी आपके साथ 12 वोल्ट वाली बैटरी सीरीज़ में लगाने के लिए भी 24 का हो जाएगा अगर ये 48 का है तो इसके लिए ये 3 कर देगा ठीक है सो ये हमने अभी लगा दिया ये जो अभी हमने लगा दिया तो ये क्लाउडी डेज अगर हो तो फिर हमारी ये सिस्टम नहीं चलेगा ये हमारा जो लोड है ये लोड इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि आज वाली जो दिन है इससे परसों वाली आज तो अच्छी दिन है इधर लेकिन अगर कल वाली हो तो इसी तरह आपके साथ इसकी एफिशिएंसी कम होती है तो आपने एक बैकअप वाली जनरेटर भी यूज़ करनी है तो इसके लिए आपने ये जनरेटर आपने उठा दिया अभी जनरेटर भी अपने कैटलाइज करना है ठीक है सो इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये चूँकि 23 है तो आप जनरेटर को 23 कर दिए चलो इसको 20 भी आप कर सकते हैं क्योंकि तकरीबन इतना परसेंट ये कवर करे तो मज़ीद आपके साथ जो क्लाउडी डेज होगा तो क्लाउडी डेज में तकरीबन 20% आपके साथ ये जनरेटर अगर आपके लिए कर दी सो देन द 5% the 5 kilowatt will be covered from your PV system. So for this case you will go to complete catalogs and we will insert the diesel engine whose capacity is 20 ये देखिए अभी बहुत बड़ी बड़ी जनरेटर आ रहे हैं
आपने छोटा जनरेटर लेना है। Конечно, потеку. Air conditioner से 20 डायरेक्ट 20 मौजूद है। ठीक है, अभी मैंने इस पर क्लिक किया लेकिन इधर कुछ नहीं आ रहा क्योंकि ये मेरा नेट थोड़ा बहुत स्लो था, इसलिए अभी आ गया। ये तो आपने लगा दिया, अपने सिस्टम डिज़ाइन कर दिए, पीवी सिस्टम भी डिज़ाइन लगा दिया। इसके पीवी से आपने बैटरी को चार्ज करेंगी और जनरेटर भी आपने लगा दिया और जनरेटर भी आपको कुछ बिजली देगा। लास्ट ऑप्शन आपने ये देखना है, माइक्रो ग्रिड कंट्रोलर। सो माइक्रो ग्रिड कंट्रोलर पे क्लिक करते आपके साथ 2 ऑप्शन होते हैं, होम साइक्लिक चार्जिंग। ठीक है, होम साइक्लिक चार्जिंग का क्या मतलब है? The cyclic charging strategy is the dispatch strategy whereby whenever the generator needs to operate to serve the primary load. In this case, क्या करता है जनरेटर आपके साथ, क्या प्राइमरी लोड ये लेगा और होमर लोड पे क्या करी? So the load flowing strategy is dispatched the strategy where whenever the generator operates, it produces only enough power to meet the primary load. सो होमवर्क प्रो लोड में इसमें अगर आप करें तो इस केस में ये आपके साथ सेकेंडरी होगा। अगर ये अपने काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकती तो फिर ये ऑन होगा, अगर ये कर सकते हैं तो इसके ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो इस अंदाज में चलाना चाहते हैं कि हमारा सब सारा सिस्टम इस पीवी से चल जाए। लेकिन अगर इसमें कुछ मसला हो, इन दिस केस वी विल यूज़ आवर जनरेटर। तो आपने ये होमर लोड फॉलोइंग, सो एल एफ आपने यूज़ करना, ठीक है, एब्रीविएशन करके एल एफ, लोड फॉलोइंग। होमर लोड फॉलोइंग का मतलब है एल एफ। ये आपने क्या करना है, इसको यूज़ करना और इसके बाद आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है। हाँ वाया हाँ वाह वाह। सो इट विल जनरेट योर ऑप्टिमम रिजल्ट्स। ये आपके लिए ऑप्टिमम रिजल्ट्स अभी क्या कहते हैं, जनरेट करती है। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है? जो सबसे बेस्ट। ये होमर प्रो ने अभी आपके लिए ये जो कैलकुलेशन करते थे बहुत से रिजल्ट इसने शो किए। ओवरऑल पे जाए आपके साथ बहुत ज़्यादा, इधर ये देखिए बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर आप कैटेगराइज करें तो आपके साथ ये जस्ट 3 1 2 3 ये 3 आपको शो करते हैं। सो ये जो 3 सिस्टम है ये बेस्ट सिस्टम है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी वाली कौन सी सिस्टम है? ये वाली। इसके बाद कौन सी सिस्टम है? ये वाली सिस्टम। इसके बाद कौन सी सिस्टम है? ये वाली। अभी ये सिस्टम आप कैसे एक तो बाय डिफ़ॉल्ट इन द केस ऑफ होमर प्रो द टॉप सिस्टम इज़ बेस्ट। इसके बाद जो होगा वो बेस्ट नहीं होगा, इसके बाद जो बेस्ट होगा वो इतना नहीं होगा। ठीक है, सो आप कैसी इसको चेक करेंगे तो आप इस एनपीसी रेट से देख करेंगे। एनपीसी रेट का मतलब होते हैं भी मेरे जहन से चला गया यार। हम्म, चलिए उसको मैंने क्रैश कर दिया। सो ये आपके साथ जो आ रही है ये सबसे अच्छी आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी ये देखिए इनिशियल कास्ट इसका इनिशियल कास्ट तकरीबन इतने डॉलर्स है और इसका इतने, तो इससे कम है ना, तो ये अच्छी है। इस तरह ये अच्छी नहीं है और ये सबसे अच्छी नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। ना दावर ठोल ना पके खाना राजी खदा खुद। आप इस तरह नहीं कह सकते कि इनिशियल कास्ट पे देखिए। ठीक है, इसके साथ आप इन पीसी देखेंगे क्योंकि इसका इनिशियल कास्ट तो अभी कम है,
क्योंकि आप जस्ट अगर आप बिजली जनरेटर से यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर इनिशियल कास्ट तो कम आती है, क्योंकि आप एक जनरेटर ले ली और इसके साथ एक कन्वर्टर कन्वर्टर और इसके साथ बैटरी अगर आप थोड़ा वो यूज़ करें तो ये आपके साथ इससे काम चलेगा, तो इस पर खर्चा कम आएगा। लेकिन जिसमें आपको ऑपरेट करेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग कास्ट इसका ईपीसी अगर आप देख लें तो ये सबसे ज़्यादा है, इसकी वजह से ये आपके साथ अच्छी सिस्टम नहीं है। अभी ये देखिए इसका इनिशियल कास्ट ज़्यादा है, लेकिन इसका जो ईपीसी है वो थोड़ा कम है। इसका इनिशियल कास्ट इससे ज़्यादा है और इसका ईपीसी भी इससे ज़्यादा है, तो सबसे अच्छी सिस्टम आपके साथ ये वाली आ रही है। इसमें ये इन दिस केस आपके साथ हमने पीवी भी यूज़ किया है, जनरेटर भी यूज़ किया है, बैटरी भी यूज़ किया है, कन्वर्टर भी यूज़ किया है। अब इस पर अगर आप डबल क्लिक करें तो आपके साथ क्या जाएगा, ये हर एक का खर्च आपके साथ आ जाएगा। तकरीबन इस पर कितना रहे, इस पे कितना रहे, इस पे कितना रहे, इस पे अगर आपके साथ देखिए तो इस केस में सबसे ज़्यादा खर्चा कितने के बैटरियों का है, क्योंकि बैटरी हर साल में तकरीबन वो ख़राब होती जाती है। इसलिए इसको आप इनवलाइज भी करिए, नेट प्रेजेंट है, इसको इनवलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इनवली इस पर कितना खर्च है, इस पर इनवली खर्चा इतना आ रहा है, ये देखिए कितना आ रहा है इस पे 4000 सारी $427 और इस पे कितनी आती है $154। बिट्रियम पर कितना आती है 7781, 7 खर्च इस पे आती है। और ये कन्वर्टर है तो कन्वर्टर पे इतना खर्च आ रहे, तो सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ का है, बिट्रियम के इन दिस केस। इसका अगर आप कैश फ्लो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कि बाई कास्ट टाइप इसका कास्ट इस तरह हर एक का इस तरह आपके साथ आ रही है। अभी ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, सो दिस इज कैपिटल कास्ट, कैपिटल कास्ट इसका इतना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कास्ट, ऑपरेटिंग कास्ट वाली कलर आप देख ली। ये आपके साथ है सेल वेज, व्हाट इज मीन बाई सेल वेज, सेल जिस तरह होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने बैटरियाँ लगा दिए और ये बैटरी ख़राब हो गई, अभी आप न्यू बैटरी खरीदते हैं, तो इस इन दिस केस आप इस तरह कर सकते हैं कि ये जो बैटरी है ये आप कबाड़ पे क्या करें, फरोख्त करें। सो जो कबाड़ पे आप फरोख्त करते हैं आपके साथ जो पैसे आते हैं इसको कहते हैं सेल वेज, इसको कहते हैं सेल वेज, ठीक है। फ्यूल फ्यूल का खर्च इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इन द पीवी सिस्टम आपके साथ फ्यूल का नहीं होता, लेकिन इन द केस ऑफ जनरेटर आपके साथ इसमें होगा। कंपेयर इकोनॉमिक्स, ये आप इकोनॉमिक्स भी इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रेजेंट पर इसका इतनी थी, एनुअल पर इसकी इतनी थी, रिटर्न इसकी इतनी थी, या इधर आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि ये और ये, तो इसका तकरीबन इधर देखिए ये डाल, इसका इतना है और इसका इतना है, एनपीसी इसका इतना है, इसका एनपीसी इतना है, इसका एनपीसी देखिए बहुत ज़्यादा, इसका एनपीसी कम है। देखिए इनिशियल कास्ट इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, लेकिन इनिशियल कास्ट तो कोई बात नहीं है, आपने पहले खर्च कर दिया, आपने सिस्टम डिज़ाइन कर दिया, आप पैसे आपसे चली गई, लेकिन ऑपरेटिंग तो आपके साथ सेव हो रही, इधर आपने पैसे खर्च कम किए, लेकिन आप इसको जब ऑपरेट करेंगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा खर्च इस पे आते हैं, तो आपके साथ ये अच्छी नहीं है। इसके साथ आप ये देखिए ये आर एक का अपने के ये जनरेटर का शो करते हैं ये वाली, और ये 20 24 ये देखिए कंपनी फॉर 24 आवर के लिए ये देखिए इसमें आपने इतना इतना आके इतना, ये देखिए जून जुलाई में सबसे ज़्यादा आपके साथ एनर्जी यूज़ हो रही है। इस तरह आपके साथ ये हर एक आपके साथ इधर यहाँ से हो सकती है। आप इसकी स्कैटर प्लॉट भी चेक कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट का मतलब है कि आपके साथ ये सोलर रेडिएशन इस तरह जा रही है, तो इसके साथ किलोवाट पर आवर जो जनरेशन है कैसी जा रही है, तो आपके साथ ये बढ़ती जा रही है, ठीक है, जनवरी से लेकर देखिए अभी मंथ मंथ वाइज तरह किया, ठीक है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं।
प्लाट, क्या प्लाट भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये एसी प्राइमरी लोड प्लाट है, तो इसके साथ अगर आप इसको क्या करें, ख़त्म कर दें, कुछ मुख्तलिफ आप यहाँ से देख सकते। एसी प्राइमरी, ये एसी प्राइमरी था, ये स्किप करें, ये भी स्किप करें। ये था सपोज, तो इधर आप मंथली भी चेक कर सकते हैं कि मंथली इसकी कितनी है। जून जुलाई पे ज़्यादा थी, सेम एज इसका प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जनवरी में हमारे साथ प्रोफाइल कैसी थी, इस तरह फरवरी में, हर एक पे आप प्रोफाइल यहाँ से देख सकते हैं। इसका हिस्टोग्राम भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हिस्टोग्राम तो आप जानते हैं ना। सो कहने का मतलब ये था कि ये आपके साथ और ये देखिए टोटल इनफीसी और ऑपरेटिंग कास्ट, ये आपके साथ बाय डिफ़ॉल्ट इधर भी आता है। आप जिस पे एग्जाम्पल इस पे आपने क्लिक करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी इनफीसी वगैरह इधर भी आ सकती है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको आपने साथ क्या करते हैं, इधर यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल, ये आपके साथ एक्सेल फाइल में स्टोर भी हो सकती है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको आप क्या करिए, मास ओवर में कीजिए, तमाम माउस सही काम ना करें, कंट्रोल सी पे, तमाम सिस्टम बुरा शेवे dalam pikir pakar le bosu seke ठीक है। इसको आपने हिंस में आपने इस तरह किया कि कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद इधर आप क्या करें, इस तरह क्लिक करिए, इस पर आप राइट क्लिक करिए, इंसर्ट, आपने इधर काले में इंसर्ट कर दिया। फिर यहाँ से आप लिख लें कि ये क्या क्या चीज़ थी। एक कैपिटल का था, रिप्लेसमेंट था, सो इसका नाम लिख ली कैपिटल, कैपिटल का। दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम था आपके साथ रिप्लेसमेंट, सो रिप्लेसमेंट लिख ली। इसके बाद ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का था। इसके बाद ये क्या चीज़ था, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का था, फ्यूल का था। फ्यूल का था और सैलवेज, फ्यूल सैलवेज, और ये आपके साथ टोटल था। इसको आप इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे आपके साथ ये आ जाएगा। دا وګوره، نو د دې نه تاسو دلته هم چې دا ګرافونه جوړولی شئ، صحیح شو. په دې هر یو کې بیا دا څه شو کوئ، سیریز 1 شو کوئ، 2 شو کوئ، 3 شو کوئ. دا اصل کې ما ولې سیریز 1 یې ولیکل، دا مونږ کنټرول زی کړو، دې کې اصل کې دا چیز مونږ نه واخیستی، صحیح ده. انزرټ ته به لاړ شو، په انزرټ کې به دې ته ورشو چې څه چل کوي. دا وګورئ، نو ستا سره شو کوي. دا اوس نه دلته ورته ولیکئ چې کیپیټل نه سی آی پي ماته دی، کیپیټل آر پي ایل دلته چې تاسو لیکلي هغه ورته دلته شو کوي. اپریشنل اینډ مینټیننس، فیول، سیلویج، ټوټل. ٹھیک ده. خیر که د دې نه هم نی خوښه نو داسې شی به وکئ چې دلته به لاړ شئ واپس. ټیک ده. دلته به راشئ ریپورټ، په ریپورټ کې تاسو سیو کولی هم شئ ریپورټ او اوپن کولی هم شئ. زه سیو کوم نه، ولې؟ ځکه چې زه پې څه کوم،
دا پی ډي اف فارم کې راځي تاسو په ډاکومېنټس فارم کې راځي چې بیا یې ایډیټ کوئ ٹھیک شو دا اوپن کړئ اوپن करेंगे साथ सब खोले अंदाज की पीडीएफ ओपन और ये पीडीएफ क्या करेगा इस पीडीएफ में आपके साथ सब कुछ होगा अभी अभी तक आपने जितने भी किए आपके साथ शेयर है मेरा स्क्रीन ये सिस्टम सिमुलेशन रिपोर्ट रेड ब्रिज नौशेरा इसने रेड ब्रिज यस सर नौशेरा हाँ और इसका जी कैपिटल सर कास्ट इतनी देखिए तो ये अभी ये देखिए अभी जो मैंने आपके साथ ये वही स्केमेटिक है ठीक है ये आप उधर इंसर्ट करेंगे ये अभी जो मैं शो करता था वही ग्राफ्स आ रहे हैं हर एक का मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स जितनी भी ग्राफ्स है आप इसको स्टडी कर सकते हैं ठीक है कि ये मेरा जो ग्राफ है आप यहाँ से इसको क्या करें स्टडी करें कि ये कौन कौन से ग्राफ इधर हम इंसर्ट कर सकते हैं और सारी इससे देख सकते हैं और हर एक ग्राफ का क्या क्या मतलब है आप इस ये फॉर एग्जांपल आप इसका ग्राफ देखना चाहते हो तो इस पे डबल क्लिक कर रिपोर्ट जनरेट करें इससे डबल क्लिक करके जनरेट करें इससे डबल क्लिक करके आप इसे जनरेट कर सकते हैं but how you will show that is this system is okay or not इसके लिए आपने क्या करना है देखना है कि इसका एनपीसी कितने है इसका ऑपरेशनल कास्ट कितने है इसका इनिशियल कास्ट कितने है ठीक है ये देखिए अभी फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करना चाहता हूँ इधर आपके साथ ये देखिए पीवी सेल है स्टोरेज है और कन्वर्टर है जनरेटर नहीं है ना पर देखिए प्यूरली ना ठीक शो नो دا به راشي اوس په دې کې موږ ته ګورې دا خو د دې دا ټوټل دغه شو پیجې یعنې دا کوم چې څومره وو هغه ټولو په هغه یو دغه کې تاسو څه کوئ شو کوئ هغې کې زه تاسو ته اصل کې ما څه شو کولو بلکې دلته به مې ورکړی ګورې دا دې چک کړه په پیوي سیل کې ستاسو د پیول خرچه نه راځي که نه دلته وګوره پیول ټوټل پیول سیل باندې خرچه څومره ده 0 لیکلې ده او دلته جنریټر استعمال شوی که نه جنریټر له به ته تیل راوړي که نه راغلی خرچه لګولې ده او چې ته صرف جنریټر استعمال کړې او دا پی وي سیل څه نه که نو بیا د تیلو خرچه درپسې ډېر شی راځي پوه به شوئ